Okay. So here I am sharing the screen and we will be doing some questions related to romantic age. Okay. So it is in your screen. You can write in your notebook also the answers and along with the questions, like some keywords you can write. Who was the last born of the English romantic poets? These are questions all related to romanticism as per related to our topic. So, who was the last born of the English romantic poets and the first to die? And the first to die. John Keats. Answer is John Keats. He died at a very early age. People say if he, remains longer, like if he lives longer, he can also surpass Shakespeare. But unfortunately or fortunately, we do not get the chance of that. Again, see, next is, which Victorian writer criticized English romantic age as immature? As immature, because he is a very serious kind of writer. He says about Chaucer also. Chaucer lacks a high seriousness. Yes. So who is he? Matthew Arnold. Arnold. Matthew Arnold. Arnold. John Keats' concept of dash, you know, may be likened to the concept of depersonalization by T.S. Eliot. कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया? टीएस इलियट हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ impersonality. That means you remain objective, because in romanticism we talk about subjective means you are personal, objective means you are thinking in an art personal manner. So जॉन कॉन्सेप्ट है जॉन कीट्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी. लिखेंगे आप नेगेटिव कैपेबिलिटी. ओके. This is a term. नेगेटिव कैपेबिलिटी. और वो किसको दिया था उन्होंने? शेक्सपियर को बेसिकली. कीट्स ने यूज किया था 1817 एक लेटर में, where he says, writer's ability that which Shakespeare possessed so enormously to accept uncertainties, mysteries, doubts without an irritable reaching after fact or reason. और ईगो टेस्टिकल सप्लाइंग की ही अगर हम बात करें तो ये कीट्स नहीं दिया था, पर ये वर्ड्सवर्थ को दिया था अगले ही साल 1818 में. ठीक है. इट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइंग सेल्फ सेंटर्ड नेचर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री की उनका जो है वो अपने अराउंड ही है ना, बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी के कि सेल्फ सेंटर्ड नेचर है. ठीक है. In Particularly his use of the 1817, narrative he voice to gave convey his for own Shakespeare. conception of a single truth. He is describing his own conception. All Okay. right. चलिए अब बहुत इजी है ये. प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स. हाँ जी. जो एक रोमांटिक मैनिफेस्टो कहा जाता है, 1898. मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट. कब आया था? When it came 1798. और आपको एक 1798. इंटरेस्टिंग फैक्ट आई विल टेल यू that if you reverse this, 1789, then it is French Revolution. And French Revolution impacted the ideas of liberty, fraternity, equality. This impacted a lot. And खत्म कब होता है? 1837 के अराउंड हम सीधा सीधा मानेंगे. वैसे 1832 में वॉल्टर स्कॉट डाइड, बट क्वीन विक्टोरिया ascended the throne. फाइन. आगे देखेंगे. Which historical event of 1789 had a huge impact on British Romanticism? क्या ऐसा 1789 में? I told this already. French Revolution. French See next. Revolution. Who said? ये कौन कहता है? I fall upon the thorns of life I bleed. It is a famous line by P.B. Shelley. और ये आपका होमवर्क है. आप मुझको बताएंगे, text by texting me that P.B. Shelley is writing this poem in which, work? I fall upon the thorns of life I bleed.
How many odes are written by John Keats? बहुत सारे लिखे ना, Ode to Autumn लिखा, और which was a precursor to Ode to Evening by William Collins, और Melancholy पे लिखा इन्होंने, तो बहुत सारे odes लिखे. Gratian Urn 6 लिखे total. Okay, who was, which 6 are those? Okay, you can also find out and tell me which 6 are those. Okay, which 6 are those odes written by him? Because see, when you will do a holistic, study, then you will get to know so many things. You will learn in a very enjoyable manner, I must say. You will learn literature. So John Keats ka basically, Odd Gratian, Northern Indolence, Laziness, The Castle of Indolence, James Thompson ne likha, Seasons likha, James Thompson has written, Ode Melancholy, Nightingale, Ode to Psyche, है ना, or Ode to Autumn. So these are the major odes. Then see, who was Wordsworth's collaborator in the lyrical ballads? Again, very easy. Coleridge. 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 Samuel Taylor Coleridge. Which work inspired Coleridge Kubla Khan? Which work inspired? It is Purchas Pilgrimage. Okay. Purchas Pilgrimage. आई एम राइटिंग पिलग्रिमेज. तो ये आपका वो वाला नहीं है, पिलग्रिमेज नहीं है जो जॉन बनिया ने लिखा है. पर्चर्स का पिलग्रिमेज है. पर्चर्स, सैमुअल पर्चर्स वाज एन इंग्लिश एंग्लिकन क्लेरिक, ओके, who published several volumes of reports by travelers to foreign countries. तो इनका है पर्चेस हिज पिलग्रिमेज. ये पूरा अगर इसका सब टाइटल पूछ ले, मान लो सैमुअल पर्चेस का पिलग्रिमेज का, तो वो भी देख लेते हैं हम. रिलेशंस ऑफ द वर्ल्ड. तो ब्रिटिश लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इफ यू विल कवर दिस, मेनली रोमांटिक विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, तो हम ये कवर करेंगे इन डिटेल. रिलेशंस ऑफ द वर्ड एंड द रिलीजन्स. Victorian we have covered, romantic we will cover, and after that modern and post modern we will go. So relations of the word and the religions. Purchas Pilgrimage. This work inspired Kubla Khan. Coleridge, Kubla Khan. Next, what is the subtitle of Prelude? It is an autobiographical work by William Wordsworth, I must tell you. And the subtitle of this is The Growth of a Poet's Mind. जिसको इरेज करके लिख रही हूँ, साथ साथ लिखते रहिए. Growth of a, The Growth of a Poet's Mind. This is a subtitle of the Prelude. बहुत important poem है वर्ड्सवर्थ ने लिखी. Okay. Then name the peasant poet of Northamptonshire. Northamptonshire का peasant poet. It is John Clary. Okay. Peasant poet of Northamptonshire. Peasant poet of Northamptonshire. जैसे हमने पढ़ा था ना, यॉर्कशायर का 3 स्टॉर्मी सिस्टर्स थी, शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे and Anne Bronte. the last one is Anne Bronte. तो उनके works we have studied in detail. So कई बार आपका places से related भी they can ask. John Clare. इनका biography किसने लिखा था? Biography by Jonathan Bate. John Clare, a biography is written by, you can write, Jonathan Bate. Jonathan Bate is a person. He is a, this person, John Clare, is the son of just a farm laborer. Okay. तो इनकी poem भी है एक, Child Harold, जिसको कहा जाता है, Jonathan Bates Child Harold to be mistakenly Clary's most, original work. और भी इनकी बहुत सारी poems हैं. Okay. John Clare, there is a work also, selected poems of John Clare, descriptive of rural life and scenery.
Okay, it's by John Clare. And Childe Harold, I told you, and Childe Harold's Pilgrimage is by Lord Byron. Okay, Childe Harold Pilgrimage is by Lord Byron. 4 parts में है ये narrative poem. Okay, 1812 के around it is written. चाइल्ड हेरोल्ड की बात करें तो जॉन क्लेयर, और पिलग्रिमेज अगर जुड़ जाए चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, इट इज रिटन बाय लॉर्ड बायरन. सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द नेम्स ऑफ इट. ठीक है, जैसे विजन ऑफ अ जजमेंट और विजन ऑफ द जजमेंट, हल्का सा इट इज विजन. द विजन ऑफ जजमेंट किसका है? देखो, अगर दा लग जाए, देयर इज अ वर्क, आई एम टेलिंग यू, एक पोएम लिखा है लॉर्ड बायरन ने, द विजन ऑफ जजमेंट. दा लग जाए तो इट इज बाय लॉर्ड बायरन, एंड इफ इट इज आ विजन ऑफ जजमेंट, then it is Robert Southey. So these confusing titles or names you can revise again and again or revisit your notes. ठीक है, तो हम कहाँ थे? जॉन क्लेरे पे थे, ठीक है ना? We were on जॉन क्लेरे. तो ब्रॉन्टे फैमिली जो है ना, सिस्टर शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, तो ये सब यॉर्कशायर से जुड़े हुए हैं, टोल्ड यू. वैसे ही नॉर्थम्पटनशायर से, और करर करर बेल्किस्का, these are the pseudonym of Charlotte Charlotte Bronte. So Bronte. pseudonyms are again important. See, आगे बढ़ेंगे. Name the place where the pleasure dome is built in Kubla Khan. Pleasure dome, हमको एक ऐसी जगह बतानी है. प्लेजर डोम इज बिल्ट इन कुबला खान. कहाँ बना था? सो द आंसर इज सनाडू. ओके. Why was Shelley expelled from Oxford? किस वर्क के कारण शेली निकाली गई थी? For his work The Necessity of Atheism. Atheism होता है जब आप किसी पे, भगवान पे विश्वास नहीं होते, you are नास्तिक. Okay, you are atheist. The Necessity of Atheism. By this work he was expelled from the Oxford. Who wrote Ode to France, influenced by French Revolution? Who wrote this work? We will do very quickly. S.T. Coleridge. S.T. Coleridge was the person who was, writing this work, Ode to France, influenced by फ्रेंच रेवोल्यूशन. आई टोल्ड यू बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. आगे देखेंगे तो पोएम टाइगर बाय विलियम ब्लेक first appeared in his own volume of poetry. The poem Tiger, on volume of poetry titled, Song of कौन सा Experience. वॉल्यूम लिखा? लैम्ब एंड द Song of टाइगर हमको Experience. पता है, विलियम Song of ब्लेक का Experience. वर्क है. सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, Song ठीक है, of Experience. मिटा रही हूँ. Oh, am I audible? सॉन्ग Hello, ऑफ Tanvi. एक्सपीरियंस. Yes, you are Songs audible. of Experience, ये वर्क Okay, में इन्होंने लिखा. speaking now, I आगे think. देखेंगे बिंजले. Ma'am, can't बिंजले hear है ना, your ये sunrise. बहुत एक मूवी भी आप देख सकते हैं. बिंजले इज अ कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. किसने लिखा? जेन ऑस्टन. और भी जेन Hello, ऑस्टन के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, Pinky, है ना. यू कैन ma'am. ऑलवेज, जैसे आपको पता लग गया जेन ऑस्टन, हम सबको पता है कि वो बहुत मेजर राइटर है ना, एक इंग्लिश Ma'am, नॉवेलिस्ट हैं. तो जेन ऑस्टन के वर्क्स को आप निकाल लीजिए और उसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है. hello, ma'am. She was, all time a kind of favorite, और जेन ऑस्टन के नॉवेल्स आज भी It's not they able were to hear. recognized. They are recognized. So Pride and Prejudice में बिंजले उनका करेक्टर है. 6 नॉवेल्स के लिए बेसिकली वो जानी जाती है जेन ऑस्टन. तो आपको ये उसमें दे सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सेंस एंड सेंसिबिलिटी कब आता है? 1811 में. फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस कब आता है? 1813 में. तो ये पहला है, और 1813 में प्राइड एंड प्रेजुडिस है. फिर आपका 1814 में मैन्सफील्ड पार्क है. देन इट इज एमा नोवेल coming in 1815, and Persuasion and Northanger Abbey, ये posthumously publish हुए थे 1817 में, क्योंकि 1817 में उनकी डेथ हो गई थी. So Persuasion
and Northanger Abbey. These are published posthumously. आगे देखेंगे. Who famously coined the terms fancy and imagination? नाम से ही पता लग रहा है fancy, imagination ये सब किसने बताया था? Coleridge ने ना, Coleridge ने बताया था. चलिए. Who wrote the famous ballad Lochinvar? Who wrote the famous ballad? Sir Walter Scott. Okay, you will not forget his name. Sir Walter Scott. Historical novel के लिए जाने जाते हैं. Father of historical novels we call it. Okay, Jane Austen. See next वही आ गया ना जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा. एमा कब पब्लिश हुआ? एमा देखो मैंने बताया था. It is written in 1815 but वो पब्लिश जो हुआ 1816 में हुआ. Okay, so Emma work. It is a novel by Jane Austen. Characters are important, no, undoubtedly. ठीक है? तो Donwell Abbey, Hartfield, Randalls, Emma Woodhouse, George Knightley. These are some characters written in, और इसकी जो सेटिंग थी जेन ऑस्टन एमा की, इट वाज हाईबरी इंग्लैंड. HIGHBURY इंग्लैंड. 1816 or 1815 you can say. It is published in 3 volumes. 3 volumes में publish हुआ. Whose epitaph reads? किसके grave पे लिखा हुआ था? Beneath this sword a poet lies. Beneath this sword a poet lies. In which? S.T. Coleridge. S.T. Coleridge. नेक्स्ट देखेंगे who wrote tales from Shakespeare. ये तो हमको पता है. भाई बहन चार्ल्स लैम्ब and मैरी लैम्ब, है ना? So Mary Lamb, a kind of eccentric person also, she killed her own mother, है ना? और Charles Lamb and Mary Lamb wrote this work Tales from Shakespeare 1807. अगर आपको शेक्सपियर के हर एक प्लेस को अच्छे से पढ़ना है तो आप ये बुक भी you can purchase from Amazon. Tales from Shakespeare 1807. Okay, in which year was Christabel? Christabel work तो हमको पता है Samuel Taylor Coleridge ने लिखा है. क्वेश्चन है कौन से ईयर में पब्लिश हुआ? ठीक है, so it is 1815. नेक्स्ट देखेंगे who wrote the romantic imagination. रोमांटिक इमेजिनेशन किसने लिखा? Who wrote the romantic imagination? तो आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है? ये सारे वर्क्स जो भी आई एम टेलिंग, इट इज रिटन बाय मॉरिस बोरा. BOWRA. So it is a critical guide to the poets of romantic period, in which his lecture Blake, Coleridge, तो वो romantic period की एक तरह से guide थी. Maurice Boura. Then who wrote the treatise The Roots of Romanticism? Isaiah Berlin. Roots of Romanticism. Sorrows of Young Weather. Goethe is writing. So all these works you can remember. I'm again repeating. Who wrote the treatise The Roots of Romanticism? The Roots of Romanticism. Sometimes we learn and then we forget it. So the best thing is to learn it again and again. Isaiah Berlin. ISAIAH. Let me erase all this and write it. ISAIAH. Isaiah Berlin. Roots of Romanticism. Then Sorrows of Young Werther. Goethe. Okay. बहुत बड़ा नाम है इनका वैसे. जॉन वॉल्फगैंग वन गठे, but you can remember like this. Okay, it is a 1774 sorry epistolary novel है. epistolary हमको पता है जो लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है. जैसे उन्होंने लिखा ना
Anne Frank ने the Diary of a Young Girl. So epistolary novel is written in the form of letters. ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये इसके सारे आंसर्स आपको नीचे दिए हुए हैं। How many books are there in Keats Endymion? कितनी बुक्स हैं? 4. ठीक है, Endymion. Then what was the first pamphlet published by Shelley addressed to the Irish people? Addressed to the Irish people. Endymion एक पोएम है जॉन कीट्स की, ठीक है, और उसमें एक फेमस लाइन है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सो वो डेडिकेट कब ये पोएम किसको करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। दे डेडिकेट दिस पोएम टू whom? इट इज चैटरटन, जिसको वर्ड्सवर्थ काफी ज्यादा प्रेज करते हैं अपने वर्क में, मार्वलस बॉय है ना। सो एंडीमिन इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है आइम्बिक पेंटामीटर में। आइम्बिक पेंटामीटर आई टोल्ड यू, यू कैन watch my previous videos of romantic revolution only. So rhyming couplets, iambic pentameter, it has been written. Keats का एंडीमियन 1818 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। एंडीमियन as a representative of joy, power of beauty, okay, a thing of beauty is a joy forever. So 4 books, no, how many books are there in Keats Endymion? 4 books. What was the first pamphlet addressed to the Irish people? What is the meaning of child in Child Harold's Pilgrimage? जो लॉर्ड बायरन ने लिखा, उसका child का क्या मतलब है? A young nobleman waiting to become a knight. Okay, waiting to become a knight. What he wants to become? Yes, please, a knight. Knight. Okay, an address to Irish people. पहला pamphlet था by P.B. Shelley. So all these things are really important. See, what scheme does Byron? तो ये आपको years याद रखने हैं। 1818 में आपका एंडीमियन आया था, और फिर शेली का कब आया था? 1812 में। 1812 में he published it in Dublin. Okay, डबलिन में ये इन्होंने पब्लिश किया था 1812 में। Catholics in Ireland has been the second class citizen for centuries, है ना। जब हम बात करते हैं जेम्स जॉयस की, वहां पे भी बहुत कैथोलिक्स हैं। और आयरिश पीपल का जब एक्ट ऑफ यूनियन था, क्योंकि वो 1800 में पास हो गया था ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, these you know 3 a kind of islands they formed to make Britain. Act of union, okay, so this thing you have to keep in mind. The Irish Parliament abolish हो गया था उस time, okay, and Ireland was given like 100 MPs at Westminster. So these are some important things. एक 1707 में भी एक एक्ट ऑफ यूनियन आया था, ओके, जिसमें आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को बेसिकली यूनाइट करने की बात की गई थी 1800। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। Okay, child. What scheme does Byron employ in Dawn 1? Dawn 1 में कौन सा स्कीम इम्प्लाई करते हैं? चलिए पढ़ते हैं। Dawn 1. Which scheme he employs? Yes, any guess?
First pamphlet पता लग गया, and addressed to English people. Then what scheme does Byron employ? Ottawa Rima scheme, okay? Ottawa Rima scheme he employs in this Don Juan, Lord Byron. Then what is the name of the protagonist in A Christmas Carol? We have done all the Victorian novels. Christmas Carol का मैंने बार बार बोला था, एक character बहुत important है. That was Ebenezer Scrooge. What was that? Ebenezer Scrooge. Ottawa Rima scheme, Don Juan. Protagonist Ebenezer Scrooge. Then देखेंगे who wrote the condition of working class in England. ये पढ़ा था, इसने लिखा था Friedrich Engels. 1823, if I am not wrong, he has written this work. Then who was one of the earliest novelists in the early Victorian era to write on criminal fiction? Criminal fiction के बारे में ये आपका लिखा था एडवर्ड. तो पहले ऐसे नॉवेलिस्ट थे एडवर्ड बुलवर्ड लिटन. Okay. Then what is the subject matter for Walter Scott, the father of historical novel The Talesman, 1825? What is the subject matter of him? Yes, please. It is subject matter for Walter Scott, The Talesman. 12th century crusades. Crusades, I hope you know, the bloodshed regarding religious wars एक तरह के थे. ठीक है. When was the Catholic Emancipation Act passed? So ये chronology में आ सकता है आपका. Catholic Emancipation Act passed 1829. Okay. So 1825, Walter Scott is writing The Talisman, in which he is taking the subject of 12th century crusade. Okay. The Talisman. It is written by Walter Scott, a novel by Walter Scott. वेवरली नॉवेल्स में हम इनको काउंट करते हैं. ठीक है. सो क्रूसेड्स के बारे में बताया है, रिचर्ड फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड सैलेडिन. जब भी वेवरली की बात आए तो ध्यान रखना ये वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स हैं. Waverly or This 60 Years Since is again a historical novel by Walter Scott. Waverly, I am writing Waverly or This 60 Years Since. वेवरली नॉवेल्स इन्हीं की ही सीरीज स्टार्ट की थी वॉल्टर स्कॉट ने. ठीक है. आगे देखेंगे which work painted an accurate portrayal of the contemporary Irish life in the 1840s. Irish life or you can say एक एक्यूरेट पोर्ट्रेल किया था. कौन सा ऐसा वर्क था? द कैलीज एंड ओ कैलीज बाय एंथनी ट्रॉलॉप. Anthony Trollope is again a major writer. The Kellys and O'Kellys. Anthony Trollope. Who will tell me if Walter Scott is related with Waverly novels, then Anthony Trollope is related with kind of novels? Yes, please. Contemporary Anthony Trollope. Irish life. It is known as Palliser novels. कौन से novels हम कहते हैं? Category Palliser novels. Chronicles of Barsetshire से भी काफी ज्यादा related हैं आपके Anthony Trollope. And the Kellys and the O'Kellys is a work which is written by, this novel is written by Anthony
Frolov to portray the contemporary Irish life in 1840s. ये कब publish हुआ था? 1848 में हो गया था. ठीक है, ये वर्क Callies and O'Callies. Okay, Waverley is related to Walter Scott and Palliser is related to Anthony Trollope. Then who accompanied? See next, who accompanied Wordsworth on his visit to Tinton Abbey? तो बहुत easy है. उनके साथ कौन आई थी? उनकी Sister बहन, Dorothy. that is Dorothy Wordsworth. Okay. Thy soul was a like a star and dwelt apart. मिल्टन के बारे में कहा है ना, कौन सी पोएम में? लंदन 1802. Who said this? Wordsworth. Wordsworth कहते हैं. Okay, next is, in which poem does Keats say hard melodies are sweet but those unheard are sweeter? बहुत आसान है. Out on a Grecian urn. ठीक है, जहाँ पे एक पोर्ट्रे होता है, पिक्चर होता है अर्न पे. Keats, Leigh Hunt and Hazlitt were ridiculed in Blackwood magazine or Edinburgh magazine we call it. किस लिए? Cockney school of poetry. क्योंकि वो मानते थे उनका जो डिक्शन था वो काफी लो लेवल का था. Keats का, Leigh Hunt का, William Hazlitt. We have read in detail about Hazlitt, है ना, Odes, 6 Odes written by Keats. तो क्या मानते हैं? कॉकनी, कि उनका काफी ज्यादा लो डिक्शन था एक तरह का. नेक्स्ट देखेंगे. ड्यू टू लो बैटरी इट एंडेड. तो आज के लिए हम इतना ही कवर कर पाए हैं. टुमारो वी विल डू फर्दर. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. यस ज्योति.